तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बढ़िया होंगे। सबसे ज्यादा या वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड मिनिस्टर जो मोदी कैबिनेट में, जो हम सबके फेवरेट हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मिस्टर एस जयशंकर, इनको हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप इनके अचीवमेंट्स देखिए, आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। ही इज़ अ ग्रेट मैन। अब बच्चों, CS कोर्स हम कर रहे हैं, और CS कोर्स अगर आपको याद हो, मैंने एक सर्वे भी कराया था कि मेन रीज़न क्या है बच्चों के एग्जाम में फेल होने का। तो 90%, 90 तो नहीं बट 60-70% बच्चों ने आंसर दिया, इट्स इनएडिक्वेट प्रिपरेशन। सो एग्जाम के टाइम पे फियर, एग्जाम के टाइम पे एंग्जाइटी क्यों होती है? तो जयशंकर जी का एक बहुत प्यारा सा, मैं एक IIT गुवाहाटी का एक स्पीच है वहाँ पे, हालांकि वो CS से उसका कोई लेना देना नहीं है, बट CS के बच्चों को एकदम दिल से छू जाएगा उनका मैसेज जो है। वो आपको ऐसा लगेगा कि वो मैसेज आपके लिए ही है। मतलब वो बता रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, जब आप किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की प्रिपरेशन में समा जाते हो, अपने आप को न्यौछावर कर देते हो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के बारे में आप डिस्कस करते हो, उसको प्रिपेयर करते हो, तो वो चीज़ आपके इंस्टिंक्ट में, आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। तो आप जैसे एग्जाम में जाएंगे लिखने के लिए, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, बेहतरीन प्रिपरेशन की है, तो मेरा यकीन मानिए आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा ही एस जयशंकर जी की एक क्लिप है, प्लीज़ इस क्लिप को देखिएगा। मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। यस, तो एस जयशंकर जी का इनडायरेक्ट मैसेज है CS स्टूडेंट्स को, स्पेशली उन बच्चों को जो एग्जाम देने वाले हैं। प्लीज़ देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। Difficult questions like I'm doing now. On the spot, and some of the questions are very sensitive in nature, considering the geopolitical issues and all those things. And each of your words can be interpreted differently by national and international media. So how do you prepare yourself mentally before going to a press conference? Look, this answer is actually going to scare you, and I hope you don't lose confidence in me. Most of the time, you don't actually, consciously prepare. I mean, meaning what happens? I mean, this is something we do as a routine. Even you keep discussing, you keep engaging. And it's not just me. I have after all a spokesperson of the government who works in my ministry. They have a briefing, so you keep, I would say, like net practice. You keep discussing things. If they ask this, what would you say? What is the messaging we should put out? What is it we should not say? Exactly what you said. How would we be read here? But at some stage, if you've done enough of it and you have a sort of aptitude for it, you have internalized it so deeply that it's a instinctive response. So there is something there. There is a training, there is a experience. There is a something which is at the end of the day, the body is such a great machine that maybe it's got assimilated out there. So often I would say when I think back at some of the difficult situations, typically there would be about 70-80% in any situation which you would have anticipated, you would know. Because it's not like you walk in without preparation. Ideally, I would like to, ideally I would have liked to know what all you guys were going to ask me today, ideally. But often I would say 10% would take you by surprise or would come at you from an angle you haven't thought. And that's really where your instinct and your experience comes in. And by the way, I'd be honest, and sometimes you make mistakes. That is also, in diplomacy, I'm not talking about, it doesn't have to be me personally, but, important people sometimes don't say the right things or don't pick the right words, and it can have consequences too. That does happen. So